So under his intricate guidance, the entire place has been renovated. In 2003, a beautiful carved stone temple of Srimati Vrinda Devi was inaugurated in Vrindakund, which Deen Bandhu Prabhu maintained for 30 years, as I mentioned. जैसे मैं बताया, मैं 30 वर्षों तक उसकी सेवा की प्रभुजी ने, और उनके बहुत से ऐसे अनगिनत उनकी उपलब्धियां हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महाराष्ट्र संघ के अंदर. आप समझ सकते हैं 55 वर्ष से जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उसमें से कुछ इस प्रकार से हैं. In Vrindavan, Deen Bandhu Prabhu was helped in restoring the Samadhi Mandir of Sanatan Pad Goswami. उनकी वहां पर समाधि मंदिर की स्थापना, उसमें प्रभु जी का बहुत सहयोग है. उसके पश्चात वो एक्टिव सपोर्टर है. जो यमुना नदी वृंदावन में आप सुन रहे होंगे, वहां पर वो कानपुर से आने के पश्चात और उधर से दिल्ली से आने के पश्चात उसमें बहुत प्रदूषण हो गया था. कुछ समय पूर्व तो कोई वहां पर जाता भी नहीं था स्नान करने के लिए, क्योंकि पूरी नदी दूषित हो गई थी. लेकिन प्रभु जी और ऐसे कई भक्तों ने मिल करके वहां पर संकल्प लिया और उसके शुद्धिकरण का कार्य वो वहां पर बहुत दिनों तक चलता रहा प्रभु जी के निर्देशन में. Whoever he comes across, he humbly invites them to come to Vrindavan. And just by seeing him, you can understand. Yesterday we had a wonderful program, evening program. And for 1.5 hours, Prabhu took all of us to Sri Dham Vrindavan. वो वृंदावन में इतने लिप्त रहते हैं, इतने युक्त है वृंदावन धाम की सोच में, विचार में, सेवा में, कि उनके मुख से, उनके चलने से, उनके सारे हाव भाव से वृंदावन धाम की का स्मरण सबको होता है. He have दर्शन ऑफ ऑल द होली प्लेसेस. तो जो भी इनका दर्शन करते हैं प्रभु जी का, जो उनके मुख से श्रवण करते हैं, उनके मुख से हम वास्तविक रूप में मुख प्रसादात तब वृंदावन धाम की वास्तविक महिमा को हम समझ पाते हैं. और प्रभु ये सेवा कई वर्षों से करते हैं वहां पर. स्पेशली इन कार्तिक मंथ, इफ यू कम देयर इन टेम्पल, ऑलमोस्ट एवरी डे ही टेक्स द यात्रा. वो पूरी पद यात्रा लेके जाते हैं और परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज उनके निर्देशन में और प्रभु जी के निर्देशन में कई भक्त, कई हजारों लाखों भक्त को ये अवसर प्राप्त हुआ है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है को वृंदावन धाम को श्रवण के माध्यम से दर्शन कर पाना. वो वास्तविक विधि है. तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि प्रभु जी पहली बार यहाँ पर कन्यादेश में आए हैं. फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ही हैज कम हियर इन कन्यादेश. एंड फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट हम लोग अपने हृदय से सभी मिलकर के प्रभु जी का स्वागत करेंगे भगवान के नाम का आशय लेकर के. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. श्रीमान दीन बंधु प्रभु की जय, गुरु श्री प्रभुपाद की जय. And also like to welcome His Grace R. Bandhu Prabhu, who has been instrumental in bringing Prabhuji here, all the way from Shri Dham Mayapur. तो प्रभु जी की सेवा में युक्त रहते हैं और उनके माध्यम से ही हमको ये अवसर प्राप्त हुआ कि प्रभु जी का संग हम सबको प्राप्त हो रहा है. तो उनके भी हम बहुत आभारी हैं. थैंक यू वेरी मच प्रभु. I'll request प्रभु जी to गार्लैंड प्रभु, प्लीज. प्रभु जी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बोलेंगे. प्रभु चाहते हैं तो पूरी हिंदी भाषा में भी क्लास दे सकते हैं, बट देयर आर सेवरल डिवोटीज हु डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, सो वी रिक्वेस्टेड प्रभु जी टू स्पीक इन बोथ द लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश. जो बंगाली भक्त हैं वो हिंदी समझ सकते हैं, और जिनको नहीं समझ में आता है तो हमारे 8 बंधु प्रभु जी बाद में बंगाली में उनको समझा देंगे. हरे कृष्ण. रिक्वेस्ट टू गार्लैंड. Hare Krishna. So it's very great honor and happiness for me to be here in Kanaya Desh with all the wonderful devotees of Kanaya Desh Yatra. So बहुत ही आनंद आ रहा है और मुझे बहुत आभारी है कि हम आपके कन्हैया देश में और सब कन्हैया देश का भक्तों के सामने है. And it's also very ecstatic that this trip we're getting to celebrate 2 Janmastamis. We were just celebrating Janmashtami in Balaram Desh, and now we get to celebrate here also. So, और भी आनंद है कि हम 2 जन्माष्टमी मना रहे हैं. अभी बालराम देश में
जन्माष्टमी मनाए हैं और अभी आपके कन्हैया देश में जन्माष्टमी मना रहे हैं। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं विदति स्वावदन्तिं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां नमो नमः। So one time, Srila Prabhupada asked the devotees, what is the most important verse in Bhagavad Gita? तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी भक्तों से पूछा कि भगवद गीता के सबसे महत्वपूर्ण श्लोक कौन सा है? So immediately everyone says Sarvadharma Paritamam me. तो तुरंत सब लोग बोले Sarvadharma Paritamam, Prabhupada बोला नहीं. So somebody said some other slok, somebody said, what is that one? Yakarosi Jahasija. Sometimes I forget things. Anyways, everybody quoted some verse, their favorite verse of Bhagavad Gita. So sab log alag slok, apna sabse priya slok ko ucharan kiya, Prabhupada nahi. So अंत में प्रभुपाद जी ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण श्लोक भगवद गीता में जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म मामेति सोर्जुना. So Prabhupada said the most important sloka in Bhagavad Gita is Janma karma cha me divyam evam yo veti tattvata tyaktva deham punarjanma naiti sorjuna. That Janma karma is like we're celebrating now Janmastami. So Janma we know means birth and karma means activities. So Janma or karma, Janam or karma. Janma karma cha me divyam. That my janam or my birth and activities, they're divya, almost like the English, divine. So mera janam or mera karma, divya hai. One time Prabhupada said, Krishna, he has rasa lila, and you all have rascal lila. But Krishna's birth and activities, they're divine. Krishna janam or karma, divya hai. Evan jo veti tattvata. Anyone who knows this, tattvata, in truth, जो इसको सही रूप से जानता है, त्यक्त्वा deham, leaving this body, त्यक्त्वा deham, because end of this body doesn't mean the end of me. I'm the spirit soul. जो जैसे हिंदी में हम बताते देहांत, देह का अंत, मेरा अंत नहीं है, देह का अंत. So tyaktva deham, tyaktva, we know the word tyag, so it comes from that word. On leaving this body, iska sharir chorne par, tyaktva deham punarjanmana, again we won't take birth. If anybody knows Krishna's birth and activities are divine and knows them in truth, then on leaving this body, he doesn't take another birth.
जो सही रूप से जानते हैं कि कृष्ण के कर्म और जन्म दिव्य है, सही रूप से वो इस शरीर को छोड़ करके वो वापस जन्म नहीं लेते. So if I don't take another body, what will happen? अगर पुनर्जन्म नहीं होते फिर क्या होगा? इस बॉडी से हम बहुत enjoy कर रहे हैं. I'm enjoying so many things with this body. What will happen? Mameti Sorjana, don't worry. Chinta mat karo. Meri paas aa jayega. You'll come to me. So this is most important verse in Bhagavad Gita. Janam karma chame divyam evam yoviti tatvata chaktva deham punar janma naiti mameti sorjuna. So I say, दिन भर हम कृष्ण के दिव्य कर्म और जन्म का ध्यान करेंगे. So on this very special occasion, we will do special meditation on Krishna's birth and activities. Now, if we ask anybody in Mathura, where was Krishna born? They will say Mathura. Big, huge temple is there. तो किसी को मथुरा से पूछ लेंगे कि कृष्ण के जन्म कहाँ हुआ, वो बताएगा मथुरा में, बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ पर. But if you ask the Brijbasis in Braj, they will say, no, Krishna was born in Vrindavan, in Gokul. अगर ये ब्रजवासी से पूछ लेंगे, वो बताएंगे नहीं, कृष्ण के जन्म हुआ गोकुल में, ब्रज में. And Prabhupada always used to quote that one very special verse, Vrindavanam prityavjam param ekam nagashchami. I do not take one step outside of Vrindavan. Krishna has told, हम एक ही कदम नहीं लेते Vrindavan के बाहर. So how he can appear also outside of Vrindavan? So कैसे प्रकट हो सकते हैं वृंदावन के बाहर? So this secret is explained by Srila Jiva Goswami in his Gopal Champu and Kavi Karnapur in his Ananda Vrindavan Champu. And we're going to tell something about that. So ye rahasya Jiva Goswami ke Ananda Gopal Champu mein और कवि कर्णपुर का आनंद वृंदावन चंपू में इसके रहस्य का सही रूप से हम समझ लेंगे. और फिर हम देख सकते हैं श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 5 अध्याय में सबसे पहले श्लोक में इसका तात्पर्य में प्रभुपाद बताते कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अलग अलग प्रमाण करके वो सिद्ध करते हैं कि जो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है वो नंदा और यशोदा का पुत्र है. जो चतुर्भुज वासुदेव वो देवकी और वसुदेव का पुत्र है. और फिर इसके रहस्य हम बताएंगे. So this Krishna, he is the son. Vishwanath Chakravarti Thakur, taking many pramans, he proves that Krishna is the son of Mother Yashoda and Nanda Maharaj. And that Chaturbhuj Wala, Vasudeva Krishna, he's the son of Devaki and Vasudeva. So many 5,000 years ago, more than 5,000 years ago, there was a great king named Devamida. 5000 साल पहले एक बहुत सुंदर राजा था Devamida. And Devamida, he had 2 wives. One was a Kshatriya, which is natural, and another was Vaishya, which is also permitted. So Devamida के 2 पत्नियां थी. एक क्षत्रिय जो प्राकृतिक रूप से होगा और एक वैश्य का पत्नी थी. ये क्षत्रिय पत्नी से इसका पुत्र हुआ Surasen. From the Kshatriya wife, he got a son named Surasen. We've all heard this name, Surasen.
And Surasen's son was Vasudev. Or Surasen ka putra tha Vasudev. Or the Vaishya wife, he got a son named Parjanya Maharaj. So Vaishya Patni ka putra tha Parjanya Maharaj. जीव गोस्वामी बताते क्योंकि वो वैश्य स्त्री से जन्म लिया तो वो गोपों का राजा बन गए. So because he was the son of the Vaishya wife, he became the king of all the cowherds. And he made his kingdom in Vrindavan. And after some time, he moved to Gokul. थोड़ी देर बाद वो गोकुल में वास करने लगे. और Parjanya Maharaj वो बहुत ही विशेष राजा था. Parjanya matlab badal. Parjanya Maharaj, he is very, very special king. Parjanya means cloud. So just like a cloud takes water from the earth and then rains it down in the form of, and rains it down in so many ways for the benefit of all living beings. So Parjanya Maharaj, he took taxes from all the people, but he rained it down on all the people with so many welfare activities. जैसे बादल ये पृथ्वी से पानी लेते हैं, फिर सब जीव के लिए पानी वर्षा करते हैं. So Parjanya Maharaj tax लेते थे इसका प्रजा से, फिर बहुत से welfare activities का वर्षा करते थे. और सब लोग बहुत खुश था Parjanya Maharaj के राजा में. Everyone was very, very happy in Parjanya Maharaj's kingdom. And Parjanya Maharaj, he had 5 sons. Upananda, Abhinanda, Nanda, Sunanda, and Nandan. We can see Nanda Maharaj, he was in the middle. So Parjanya Maharaj के 5 पुत्र थे, Upananda, Abhinanda, Nanda, Sunanda, and Nandan. और Nanda Maharaj बीच वाले थे. So after some time, Parjanya Maharaj became very old. So he, as is the nature, the parampara, he gave the kingdom over to his eldest son, Upananda. So जब Parjanya Maharaj बहुत वृद्ध हो गया, so परंपरा के अनुसार उसके ज्येष्ठ पुत्र को Upananda को राजा बनाया. Lekin after some time, Upananda, he called a meeting of all the cowherd men. In that meeting, he began to describe the glories of Nanda Maharaj. So थोड़ी देर बाद Upananda एक बैठक बुलाया और इस बैठक में वो Nanda Maharaj के गुण गान गाने लगे. It appeared that he had 5 mouths as he described the glories of Nanda Maharaj. ऐसा लगता था कि इसका 5 मुख था, जैसे जब नंद बाबा के गुणगान करते थे. और नंद बाबा का सिर झुक गई. Nanda Baba put his head down in shame. And then he made a proposition that actually Nanda Baba, he's more qualified than me, he should become the king. वो एक proposition रख लिया सबके सामने कि नंदा बाबा मुझसे गुण थे, तो वो हमारा राजा बन जाए. When everyone heard this proposition, immediately they unanimously passed a resolution that Nanda Baba should become the king. Because Upananda said, I am Upananda, the follower of Nanda, so he should be the king. I'm Upananda. Just like in the temple, we have Ajaksh and Upajaksh. So everyone unanimously passed this resolution that Nanda Baba should become the king. So sab log unanimously, I don't know this unanimously ये resolution को pass कर दिया कि नंदा बाबा हमारा राजा बन जाए. और इस resolution से सब लोग बहुत खुश थे. And from this resolution, everybody was very, very happy.
Our GBC, if they could pass a resolution that everybody was happy with, they would also be very happy. But this is Braj. Magic things can happen in Braj. हमारे GBG वो भी खुशी होगा और ऐसे resolution pass कर देंगे सब लोग इसका सम्मत है ये लेकिन ये ब्रज है बहुत मैजिक और जादू वाले चीज हो सकते हैं ब्रज में So Nanda Baba, he became the king. In a nearby town, there was a very wonderful gopa named Sumukh. पास का गांव में एक बहुत सुंदर गोपा था, इसका नाम था Sumukha. And Sumukha, he had a very, very beautiful daughter. और Sumukha के बहुत ही सुंदर पुत्री थी. इसका नाम था Yashoda. Her name was Yashoda. We see all the original Brijvasis have very beautiful names. Yashoda, Yash Deni Wali, Kirti Deni Wali, Vrishabhanu's mother is Sukha Sukh Deni Wali. ये सब प्राचीन ब्रजवासी सब देने वाले हैं अब ये सब देने वालों चले गए उन्हीं लेने वाले Now the givers have gone and only takers are left. So seeing that Nanda and Yashoda had very matching qualities, they arranged the wedding of Nanda and Yashoda. Iska gun barabar dekhkar, iska vivaha ka sampann hua. And under Nanda Maharaj and Yashoda rule, all the Brijvasis were very, very happy. Nanda Baba और यशोदा का राज्य में सब लोग बहुत खुशी थे किसी का कोई तकलीफ नहीं था Only one difficulty was beating on the hearts of all of the Brijvasis. That Nanda and Yashoda had no son. सब लोग बहुत खुश थे केवल एक ही तकलीफ था कि सब हृदय के ऊपर थक रहा था कि नंदा यशोदा का कोई संतान नहीं बहुत साल बीत गए कोई पुत्र नहीं आया After so many years, no son came. One day, one very strange woman entered Gokul, wearing saffron like a sadhvi, and in her hands were two children who were obviously her grandchildren. So एक दिन की बात है कि गोकुल में एक बहुत विचित्र स्त्री आई थी इसके गेरुआ रंग के कपड़े थी जैसे साध्वी और दो बच्चे थे इनके हाथ में जैसे पोतनी थी पोता पोती Well, the Brijvasis, they had too much faith on sadhus and sadhvis. Brijvasis, they had too much faith on sadhus and sadhvis. All the babas go every day. Radhisham Madhukari, Radhisham Madhukari, Hari Bol, Roti Do. And everybody gives whatever they want. So the Brijvasis, they bowed before her and asked her who was she, where she came from, and what she desired. So सब ब्रजवासीगण उसका प्रणाम किया और पूछा कि आप कहाँ से है, क्या नाम है और क्या चाहती हो? So she told, my name is Purnamasi. I'm from Ujjain, Avantipur, where Bhakti Charu Maharaj had built a big, huge marble temple for Madan Mohan. And my son is Sandipani Muni, and these are his two children, Nandi Mukhi and Madhumangal. Shruti told, हम तो अवंतीपुर से आया, मेरा नाम है पूर्णमासी, मैं संदीपनी मुनि का माता जी है, तो ये इनके पुत्र है, बच्चे है, नंदी मुखी और मधुमंगल. And I'm very expert in Jyotish, astrology. मैं बहुत निपुण है ज्योतिष शास्त्र में. And I have seen that very soon Nanda and Yashoda will get a
son. मैंने देखा आकाश में कि नंदा और यशोदा बहुत जल्दी इसका पुत्र होगा. We heard daughter, but she said putra. And I want to see that event, so you please make a little grass shack for me to stay, and I want to see that happen. और हम ये घटना देखना चाहती हूँ, so एक फार्न कुटी बनाओ और हम गंगा के जमुना के तट पर रहेंगे और इसका घटना का दर्शन करेंगे. So the Brishvasis made a little hut for her, and she and her grandchildren began to live there. So Brishvasi का एक छोटा सा फार्न कुटी बनाएगा जमुना के तट पर और पूर्णवासी और मधुमंगल नंदी मुखी वहां रहने लगे. So एक दिन की बात है, पूर्णवासी नंद और यशोदा के पास आया जब अकेले थे. One day, Purnamasi came to Nanda and Yashoda when they were alone. And she told them that if you want to get a child, if you want to get a son, then you must follow all the Ekadasis very, very carefully for 1 year. अगर आप संतान चाहते हो, तो आप बहुत सावधानी से 1 साल तक ये सब एकादशी का पालन करें. जैसे कल ही एकादशी थे, हम तो व्रत रखा एकादशी में. जो एकादशी का पालन नहीं करते, आप ये वृष भक्तों से पूछ सकते हैं, हम पूरा व्रत करना नहीं, कब केवल फलाहार प्रसाद. If somebody here is not following Ekadasi yet, you can learn from the older devotees you have to follow. You don't have to fast completely, just you take fruits and nuts and like that, vegetables. And now you're going to see the power of Ekadasi. अभी आप दर्शन करेंगे एकादशी का क्या शक्ति है उसका पालन करने का. Because the Brishvasis, they're simple cowherd people, they don't necessarily follow Ekadasi. If you go on the Braj Prakama with Janmashtami Maharaj sometime in Karti, you will see Ekadasi day, Brishvasis making their rotis. अगर आप जाएंगे ये ब्रजमंडल परिक्रमा में लोकनाथ स्वामी के महाराज के साथ एकादशी के दिन हम देख लेंगे सब विश्वासी गण आपका रोटी बना रहे. So you follow very carefully for 1 full year. So Nanda and Yashoda began to follow the Ekadasi Vrat very carefully for 1 full year. So Nanda and Yashoda ये Ekadasi का व्रत पालन करने लगे 1 साल तक. So one night, it was the month of Magh. Magh means in Braj, very, very cold. In fact, it was Magh Purnima. Second की बात था, वो Magh महीना के थे, जब बहुत ब्रज में बहुत ठंडा है. और वास्तव में वो Magh Purnima था. And Nanda Maharaj, he was sleeping on his bed with his nice warm rajai. And Mother Yashoda, she was sleeping on her bed with her nice warm rajai. In the middle of the night, Nanda Baba got dream. So Nanda Maharaj apna bistar par apna sundar garam rajai so raha tha. Or Ma Yashoda apna bistar par garam rajai so rahi thi. और रात के बीच में नंद बाबा का स्वप्न होने लगे. In his dream, he saw this beautiful blackish boy, just like a fresh monsoon cloud, with lovely lotus petal eyes, curly black hair, peacock feather in his crown. Very, very sweet, tiny, tiny little hands and feet, and auspicious markings in his hands and feet. So Nanda Baba अपने स्वप्न में वो देखे बहुत सुंदर बालक था, जिसके बहुत सुंदर ताजा
मानसून मेघ का नील वर्णन था। और बहुत सुंदर अंके थे, कमल पत्ते के समान, और घुंघरी वाली केश, काले वाली केश, और मोर पंखा, और छोटे छोटे हाथ और पाँव, जिसके बहुत सुंदर लक्षण था. And he saw this boy within his heart. And as he watched, that boy went across the room and established himself in the heart of Mother Yashoda. As soon as that boy was established in the heart of Mother Yashoda, Nanda Baba woke up. जब वो नंद महाराज ने देखा कि ये सुंदर सुंदर लाला अपने हृदय से वो कमरे को पार करके माँ यशोदा का हृदय में वास करने लगे, स्थापित हो गया. और जब माँ यशोदा के हृदय में स्थापित हो गया, नंद बाबा का स्वप्न टूट गए. His whole body was shivering, his hairs were standing on end, tears were coming from his eyes. उसके पूरे शरीर में कंपन होने लगी, रोमांच भी होने लगी, आंसू भी बहने लगे उसका आंखों से. He looked across the room. Mother Yashoda was also sitting on her bed. Whole body was shivering. Romanch ho raha tha. Her hair standing on end, tears coming from her eyes. Ek saman Maa Yashoda bhi beti thi, kampana or romanch or aansu. And Nanda Baba, he's so excited, he wants to speak, but he can't speak. And Mother Yashoda, she's so excited, she can't speak. Dono कि इतना आनंद आ रहा था कि बात भी नहीं कर सकते थे. Nanda Baba, he said, and Mother Yashoda said, and Baba said, and Maya Yashoda said, I. दोनों का पता लगा कि एक ही साथ एक ही स्वप्न हुआ, एक ही समय से. They both understood, they had the same dream at the same time simultaneously. So after that day, all the lakshan appeared in Yashoda's body that showed that she was with child. तो उसी दिन के पश्चात माँ यशोदा के शरीर में ये सब लक्षण होने लगे कि वो गर्भवती है. And all the old ladies of this village, they understood. Everybody, all the old ladies of Gokul, they understood. Because we, in English, we say, you can fool some of the people all of the time, all of the people some of the time, but you can't fool mom. अंग्रेजी भाषा में बताते कि आप सबको धोखा दे सकते हैं कभी कभी, और कुछ को हमेशा धोखा दे सकते हैं, लेकिन माँ को आप धोखा नहीं दे सकते. So ये सब रजिस्ट्री पता लगे कि माँ यशोदा का बच्चा होने वाला है. So the news went all over Gokul like garam jalebi. Nobody can wait. Yashoda is going to get child. After some time, in the old days, in the house, we had a special room, or in the compound, there was a special building called Prasutigar, the maternity room. So Maa Yashoda, she began to stay in the maternity room along with a midwife. So, ये पुराना जमाने में ये कंपाउंड में एक इमरत था प्रसूतिगार, और हाउस में एक कमरा था प्रसूतिगार, और माँ यशोदा वहाँ रहने लगी ये नाई के साथ. Because पुराने जमाने में हम हॉस्पिटल नहीं गए थे. जैसे मेरा भी पुत्री, वो भी घर पर जन्म लिया. In old days, we never went to hospital. There was always ladies in the town, the midwife that knew all the things what to do.
Even my own daughter was born at home. And that naturopathic doctor, he was one of these people who had crooked eyes. You never know which eye to talk to. He had a squeaky voice. और हमारे जो naturopathic doctor थे, वो दोनों अंधेरे थे. किस अंग से बात करना वो पता नहीं लगते. He had a very squeaky voice. I delivered 5,000 babies in my lifetime. 500 babies in my lifetime. 500 babies. One time we went to hospital. Huh? Is it a disease? ये बीमारी है? ये सबसे प्राकृतिक वस्तु. वो सारे दिन होते रहते पूरे दुनिया में. Huh? Hospital जाने की क्या आवश्यकता? Why do you have to go to hospital? It's the most natural thing. 500 babies. एक hospital में गए. So, when Ma Yashoda became very big, then she went to stay in the प्रसूति घर. Ma Yashoda जब उसका पेट बहुत बढ़ गई, वो प्रसूति घर में रहने लगी नाई के साथ. That reminds me, one time Prabhupada was in Hawaii. After Bhagavatam class, he came outside the temple. And two of his lady disciples were there, very big and pregnant. और मुझे याद आ रहा है कि एक बार प्रॉपर हवाई में था और भागवत प्रवचन के बाद वो बाहर आए और दो चेली थी कि बहुत ही बड़ी थी. And Prabhupada looked at them like a grandfather looks on the granddaughter. And he said, a tree is most beautiful when it is full with fruit. He said, and a woman is most beautiful when she's full with child. Prabhupada ने कहा कि एक वृक्ष सबसे सुंदर है जब फल से भारी है और एक स्त्री सबसे सुंदर है जब बच्चे से भारी है. And some devotee said, and Prabhupada, disciple, when is disciple most beautiful? And Prabhupada said, you do not know? Everyone froze. एक बात बताया कि प्रभुपाद ये शिष्य कब बहुत सुंदर है नहीं जानते सब लोग संभल हो गया. But Prabhupada said, when he follows the order of the spiritual master, then the disciple is most beautiful. जब गुरुदेव के आज्ञा के पालन करते ये शिष्य बहुत सुंदर है और स्त्री बहुत सुंदर है, वृक्ष बहुत सुंदर है जब फल से भारी है और स्त्री बहुत सुंदर है जब बच्चे से भारी है. So finally it came to the Krishna Paksh Astami of the month of Bhadra, Krishnastami. And that nurse in the evening, she went out to do some errands. And she felt a little tired. So she decided to take a snap. Something between a sleep and a nap, we call it snap. तो एक दिन की बात है, ये कृष्ण पक्ष भद्र मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी कृष्णाष्टमी के दिन शाम को ये नाई किसी एरंड से चले गए और थोड़ा सा नींद आ रहा था. तो वो सोचे कि हम एक स्नैप करेंगे, स्लीप और नैप के बीच में स्नैप. And she fell fast asleep. वो बहुत गहरी नींद में चली गई. And Ma Yashoda was all alone. The nurse didn't come. Ma Yashoda kelly thi nahi nahi aayi. She tried to sleep, but very restless night. She can't get any sleep. She's on this side, that side, back side, this side, that side. Nind nahi aa raha tha. At the midnight, she understood that child is coming. And she's all alone. And she never had child before. And she's not a young girl. Even white hairs are coming. Pura body, midnight, what do you say, midnight? Anyway, midnight, आप जानते हैं. पूरा midnight में माँ यशोदा का पता लगा कि बच्चा होने वाला है और वो कभी बच्चा फायदे कभी नहीं कर दिया और वो जवानी ने उसका
white baal bhi aa rahe, aur kheli hai. I lived in Bharat for 40 years. I've seen when the young girls are pregnant, they're going to give child, they go home to their mother's house. She never had child, but mother had so many, she knows what to do everything. Ma Yashoda kheli hai. Somehow or other, she gave birth to a little baby girl. She didn't get any sleep. Now she just went through childbirth, she fell asleep, and she didn't realize that from her heart came a beautiful blackish baby boy. वो माँ यशोदा अभी पूरा रात नींद नहीं आए, अभी चाइल्ड बर्थ हो गया, तो वो एकदम सो गए और पता नहीं लगा कि आपके हृदय से एक बहुत सुंदर श्याम वर्ण का लाला का जन्म हुआ, माँ यशोदा के जुड़वा से. But she fell asleep. Meanwhile, we'll go to Mathura. We'll leave Braj for a little while. We'll go to, so Abhi Braj छोड़ देंगे और Mathura के पास रहेंगे. So Mathura, we know that Kams was a very cruel king. Kams, Bodhi, cruel Raja the. And Devaki was like his sister. So he was, Devaki's marriage was arranged with Vasudev. So Devaki ka shaadi ho gaya Vasudev ke saath. And nowadays we can't imagine, but this is a very traumatic, dramatic event. The girl has never lived outside her father's house. Now she's going to her father-in-law's house. Nowadays we can't understand, but those days are different. So that she may, Prabhupada explains, so she may not feel any trouble, some relative will go with them up to the father-in-law's house. Just say, wo koi taklif nahi महसूस नहीं कर सकते, एक रिश्तेदार उनके साथ हो जाएगा अपना father-in-law के घर पर. So Kamsa was driving the chariot. All the citizens were happy. Vasudev Devaki ki jai! Devaki Vasudev ki jai! अचानक एक आवाज आया, खांस मूर्ख, तू अपना बहन को चला रहे थे रथ में, लेकिन आप नहीं जानते कि इसका आठवां लाल तेरा था. क्या आठवां लाल तेरा था. Everybody was shouting, Devaki Vasudev ki jai. Everyone was very happy. Suddenly a voice came, Kans, you fool! You're driving your sister's chariot, but you do not know her 8th child will kill you. So Kans, he became very frightened because demons are very much attached to the body, conception of life. So Kans bahut dar gaye. Or Rakshas log kuch bhi kar sakte. So iska talwar nikal diya, iska ben ko marne ke liye. So demon, he can do anything for his own self-protection. So he got ready, he pulled out his sword ready to kill Devaki. Vasudev came in between, Vasudev beach mein aaya. He tried to reason with Kans. That why are you so afraid of death? As soon as you're born, you're starting to die. It's not that you're 25 years old today, you're 25 years dead. वो कुछ दर्शन करने लगे कि आप ये जन्म के साथ मृत्यु होती, मृत्यु प्राकृतिक रूप से आते हैं, सो क्यों डरते हैं? लेकिन खांस वो दर्शन नहीं सुन सकता था. Then he said, anyway, it's your sister, it's a wedding, your name will become mud if you kill your sister on her wedding day. This is a very bad thing. आपका नाम बिल्कुल खराब हो गया, वो मिट्टी में चले जाएगा अगर आपका बहन इसके शादी के दिन पे मरते हैं. Kams, he couldn't hear, Kams नहीं सुन सकते. So then Vasudev विचार किया
कि अभी देवकी के प्राण में रक्षा करेंगे और हम देख लेंगे अगर बच्चा होगा इसकी कैसे रक्षा होगा. Finally, Devaki could raksha. So he was thinking, let me save Devaki anyway. If there's children, then I'll see what to do then. Who knows, maybe no children will come. Anyway, let me save Devaki's life for the time being. So he told Kans, Dekho, now look, if there's any child, I promise every child I will bring to you, and you can do whatever you like. Because it's not your sister who will kill you, it's the child who will kill you. Huh? So Vasudeva बताया कि देखो आपके बहन से कोई भाई नहीं है, कि पुत्र से, और शायद पुत्र नहीं होगा. अगर पुत्र होगा, मैं स्वयं ये पुत्र आपके पास लेके जाएंगे, तुम कर सकते जो करना चाहते हो. Everybody knows Vasudev's word is as good as gold. Vasudeva का वचन सोने का समान है. So somehow or other, Kams, he became a little moved. Kamsa told us a daya aya. Ye Vasudeva ka pratigya sunkar. So he let them go. Now we can just imagine the scene. Almost a year later, Devaki had a child. Just imagine the scene. This is her firstborn child. She doesn't want to give him to her husband, but she knows her husband has to keep his word. ये चित्र को देखकर देवकी के सबसे पहले पुत्र हैं. वो नहीं देना चाहते आपका पति को वसुदेव, लेकिन वो जानती है कि वसुदेव अपने बच्चन को रक्षा करने हैं. ऐसे आंख से वसुदेव को देखो, she's looking at him with longing eyes. But Vasudev, he has to follow his word. Vasudev का बच्चन का पालन करना. He takes that child, he comes to Kams. Anyway, it's the 8th child I have fear from. You take this one home. तो कंस बताया, ये देखकर कि वासुदेव अपने बच्चन पे खड़े हैं, तो उसका दाया आया और बोला ठीक है ये ले जाओ, इस आत्मा का खतरा है, इसका कोई खतरा नहीं है, इसे ले जाओ. लेकिन वासुदेव कंस का बच्चन ने he cannot put any faith in Kansa's words. He goes home. So by the association of Vasudev, he became a little pious. Vasudev के साथ से थोड़ा सा pious हो गया. Then Narad Muni came. And Narad Muni always comes at those times. And Narad Muni, he told Kans, he took him to a secluded place. Narad Muni आए थे. Or Kams le gaye akele. Or Narad Muni said, have you heard the news? I saw it on the internet. It's all over the internet. The Devas and Devis are taking birth in the Andhika, Bhoja, Yadu and Vrishni dynasties. Did you hear? Dekha internet mein. ये देवी देवता जन्म ले रहे हैं कि अंधका बोझा और वृष्णि और यादव का डायनेस्टी में, वंश में. और ये देवलोक आप श्रद्धा नहीं रख सकते इनमें. ये सब बहुत चालू है. हम लोग ऐसे गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. But maybe these devas, they count 1, 2, 3, 4, 5, 6. This could be the 8th child. Anyone could be the 8th child, depending. They're very tricky. So Kans, he started to, he called all his ministers. By their demoniac association, he again became cruel. So ये सब minister लोग बुलाया
और इनका क्रूर संग से वो भी क्रूर होने लगे. And he had Vasudeva and Devaki thrown in jail. He threw his own father Ugrasen in jail, and he himself became the king. अपना वसुदेव और देवकी जेल में डाला, इसका अपना पिताजी उग्रसेन भी डाला जेल में, वो राजा बन गए और ये बच्चा लेके उसको स्मैश कर दिया एक पत्थर पर माता जी के सामने. इतना क्रूर था, हम कल्पना नहीं करना चाहिए, इतना क्रूर था. We should not even calculate how cruel he was. So ऐसा होने लगे 6 बार. क्योंकि ये सब पुत्र वो पहले Hiranyakashipu का पुत्र थे. These 6 sons were the sons of Hiranyakashipu. Some Puranas say the grandsons, or some say nephews. और इनके सारे नाम था काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य. हमारा प्रिय मित्र है. हम बहुत अच्छी तरह से रखते हैं. Because all these things have to be cleaned up from the heart for Krishna to come. ये सब हमारे हृदय से फेंकना चाहिए जिससे कृष्ण हमारे हृदय में आ सकते हैं. So finally, 7th pregnancy came. And Krishna called Yogamaya. ये धीरे धीरे ये 7वां का गर्भ होने लगे और कृष्ण योग माया को बुलाए. He told her, you take this embryo across the Jamuna and put him in the womb of Rohini. Because this embryo was none other than a Mahasankarshan, Balaram. And because he'll be attracted to Rohini's womb, his name will be Sankarshan. Because he will be very strong, his name will be Balabhadra. And because he'll give pleasure to all the citizens, his name will be Ram. So Yogamaya ये 7वां गर्भ को रोहिणी के गर्भ में डाला और सब लोग समझ लिए कि देवकी के गर्भ नष्ट हो गया. So the 7th pregnancy was switched to Rohini's womb in Gokul. She had been there. Vasudeva sent her there for safety. And everybody understood that Devaki's 7th pregnancy was miscarriage. Then for 8th time, Devaki became pregnant. 8वां बार Devaki गर्भवती होने लगी. And she became so beautiful. And Kans, he was so frightened. He could understand now Vishnu has come. The Devaki is so itna sundar hai. So ये 8वां गर्भ वो विष्णु था. और देवकी बहुत ही सुंदर होने लगी. कंस बहुत डर गए और दिन और रात कंस कृष्ण के ध्यान करते. Day and night Krishna was thinking of Vishnu. He was completely Krishna conscious. बिल्कुल कृष्ण भावना भावित थे. मैं ईर्ष्या करते हैं. दिन और रात कृष्ण के बारे में सोचते थे. इतना कि एक बार इसका नौकर आया जल लेके एक चांदी के ग्लास में. तो सारे बहुत ही रंगीन प्रतिबिंब होने लगे और स्पार्कलिंग होने लगे. It was all very shining with all, reflecting all the colors of the palace and shining from the silver glass. And Kans, he saw the water coming. Well, yes, Nokar aane lage dekha. He began to call, guards, that Krishna's come, kill him, Krishna's come, kill him. और कंस बताया कि ये दूस्त आने लगे, कृष्ण को मार दो. Nokar said, Are, Maharaj, I just brought you some water.
Are Maharaj, toda sa pani laya. We all go to Vrindavan, and first word that our foreign devotees learn in English is pani. Everybody's asking, oh, where's water? Pani, pani, where's pani, Prabhu? But even seeing pani, even seeing water comes from seeing Krishna. Pani ko dekhkar bhi, Krishna ko dekh raha tha. His cook came with beautiful silver thali and silver katoris and nice red tomato chutney and green palak paneer and nice orange carrot halava. Bahut hi rangin bhojan laya, bahut sundar sundar silver ke chali, sab rang ka pratibimba hone lage. And Kansi saw that, comes to Dekha. Guards, Krishna has come, kill him. Huh? And the cook said, Are Maharaj, I just brought your bhojan. Humne aapka bhojan laya. Kans even bhojan ko dekhkar Krishna ke dhyan aaya. Then you tell me, when there's feast and you see that nice gulab jamun sitting on your plate, such bolo, do you think of Krishna? Of Krishna ka smart hote? Kans even seeing his food, he was thinking of Krishna. Khana ko dekhkar bhi Krishna dekh raha tha. So Krishna conscious. Kans ke do patniyan thi, asti aur prati. वो बहुत सुंदर साड़ी पहनी, बहुत सुंदर जवार लगाया और बहुत सुंदर सजन किया और कंस के सामने आया और कंस ये गार्ड से बोले कि गार्ड मारो, कृष्ण बलराम दोनों आए, तो कृष्ण बलराम दोनों आया और कंस, he saw them, he said, oh, guards, kill them, Krishna and Balaram both have come, kill those dudes, kill them. His wife said, अरे हम आपकी पत्नी आए. Such bolo. When you see your wife, do you see Krishna? Even seeing his wife comes with seeing Krishna. Iska patniya kabhi dekhkar Krishna dekh raha tha. So Krishna conscious. Lekin Rupa Goswami batate ye bhakti nahi hai. Bhakti anukul hai. Ye pratikul. He wants to kill Krishna. So finally, on the Krishna Paksh Ashtami day, that Vasudev suddenly appeared. He wasn't born in the ordinary way. वो साधारण रूप से जन्म नहीं लिया. वो देवकी के गर्भ से बाहर वो सुंदर सुंदर रूप में आया, चतुर्भुज रूप में आया. Very beautiful form came outside, not in ordinary way. With beautiful pitambar dhoti, golden helmet, sundar gold earrings, beautiful necklaces and golden armbands. Children don't come like that. Babies aren't born like that. Krishna's janam divya hai. He's divine. And Vasudeva and Devaki prayed, please hide this form. If Krishna, if Kam sees you, then he'll kill you. ये रूप चुप करो और छिपा दीजिए, नहीं तो खान साहब को मार देगा, मारने के प्रयास करेंगे. So then he told Vasudev, now you take me across the river to the house of Vasudev, where baby girl has been born. You put me there and take that baby girl and come back. So ये बच्चा ले जाओ गोकुल में जहाँ माँ यशोदा का बच्ची हुआ, इस बच्ची के वापस ले आओ. So all the chains of Vasudeva opened up automatically. And all the guards were in their constitutional position, sound asleep. ये सब चेन खोल गए और ये सब रक्षा करने वाले वो सो गए, सब चौकीदार सो गए, जैसा हमेशा है वो रहते हैं. And all the doors automatically opened of the prison.
हाँ, ये सब दरवाजा ऑटोमेटिक अपने आप खुल गए. We thought this automatic door was something new, huh? 5,000 years ago they had. And Kans, Vasudev, एक सोने के बिस्तर पर ठाकुर जी को ले जाना था, लेकिन केवल उनके पास एक सुरपी था, जो साधारण चीज है. एक सुरपी में कृष्णा गोकुल गए. और अनंत शेष, बारिश हो रहा था, अनंत शेष प्रकट हो गया उसका रक्षा करने के लिए. और वसुदेव ये जमुना के पास आया. और बारिश, बिल्कुल बारिश हो रहा था, so बहुत बारिश, पानी बह रहा था. So much water was coming in Jamuna. As Vasudeva entered, that water kept getting higher and higher and higher and higher. Vasudeva Jamuna में प्रवेश किया, लेकिन बहुत पानी आया, बारिश हो रहा था, पानी बहुत जोर से चल रहा था और ऊंचे आया. So finally Vasudeva, he was calling, koi lo, koi mera lala le lo, koi mera lala le lo. And that ghat became known as Koi Laga. Ye ghat ka naam hone lage, Mathura side mein, Koi Laga. Or Birch Foundation, bahut sundar banaya, sundar ghat or dioramas banaya. Then Krishna put his foot outside the basket and touched Jamuna, and she came ankle deep. So Thakurji ne apna pav Jamuna ka sparsh kiya, और Jamuna आपका ankle पर चले गए. और आसानी से वसुदेव पार कर दिया. She wasn't coming with full of water, she was full of desire to touch the lotus feet of Krishna. Then she came down. By Yogamaya potency, everybody in Gokul was sound asleep. Yogamaya ke Shakti se sab log so gaye Gokul mein. और अंधेरे में वसुदेव ने देखा कि ब्रजनंदन श्याम सुंदर वहां थे और वासुदेव कृष्ण इसके लीन हो गए उनसे. प्रभुपाद बताते हैं कृष्ण बुक में कि जब ब्रजनंदन श्याम सुंदर के अवतार होते, ये सब अलग अलग विस्तार अवतार ठाकुर जी में लीन हो जाते. So ये वासुदेव कृष्ण अब ब्रजनंदन श्याम सुंदर में लीन हो गए और ये बच्ची वापस ले गए और सब लोग सो रहा था. So सवेरे ये नाय ये बोर्ड सुन लिया. The night she heard the peacocks crying. And she woke up. Whole night is gone. I left Yashoda alone. She ran to the Prasuti gar. Oh, ये नाई, वो पूरा रात बीत गई और Yashoda carried दौड़ती Prasuti gar पर गई. When she came, she opened the door. She saw beside Yashoda this beautiful blackish, beautiful baby boy with lotus petal eyes, curly black hair, tiny little hands and fingers. Beautiful curly hair, his fingers stuck in one of those curls, he can't get it out. And she screamed with delight. वो देखा कि माँ यशोदा के बाजू में बहुत सुंदर श्याम वर्ण का लाला है, जिसे बहुत सुंदर कमल के समान आंखें है, मुंगरी बड़े केश है, tiny छोटी अंगुली और पाँव और हाथ का अंगुली है, उसका हाथ का अंगुली एक उसके केश में फंसे है, निकाल सकते और चिल्लाया. So माँ यशोदा जग गए और देखा साथ में एक बहुत सुंदर लाला है, उसको लेकर उसका छाती पर लगाए. Mother Yashoda, she woke up, she saw this beautiful child lying beside her, she held him to her breast. Oh, कितना कोमल है जैसा माखन, कितना सुंदर है जैसे नील कमल, कितना सुंदर आंखें है, सब so सुंदर. She was just feeling so beautiful child.
the nurse, she ran to the Goshala where Nanda Baba and all the cowherd men were milking the cows. ये ना दौड़ते दौड़ते गए गौशाले में जहाँ ये नंद बाबा और ये सब भाई लोग ये दूध निकाल रहा था गायों से. When they saw the nurse come, they all stood up. जब ये नाई को देखा, ये सब खड़े हो गया. And the nurse, she started to make an announcement, but she's so excited, no sound came out. ये नाई बताने कुछ घोषणा करती थी, करना चाहती थी, लेकिन इतना आनंद आ रहा था कि कोई आवाज नहीं आया. And the cowherd man, जब गोपगण बोला कि यशोदा का बच्चा हुआ, एक लड़का है, और Nanda Baba बेहोश होने लगे. Nanda Baba was so shocked when he heard this news. और बहुत चिंतित होने लगे. अभी ये सब गाय को सजाने हैं, दान देने के लिए, और भंडारा बनाने हैं, और ये करने हैं, ये करने हैं. और सब भाई लोग बोले देखो हम लोग आपका सब तैयारी करेंगे, आपके बच्चे को देख लो. All the brothers said, don't worry about a thing, we'll take care of everything. Because in old days, we all lived together, all the brothers and all their wives, and everybody helped one another. So they said, we're here. What are we here for? We'll take care of everything. You go see your child. Nanda Baba's feet didn't even touch the ground. He was just swimming in the ocean of bliss. Nanda Baba ka pao zaman pe chua nahi. Wo Nanda ke sagar mein thair raha tha. He got to the प्रसूतिकार पे आया, लेकिन माँ रोहिणी सब पहले से ही आ गए और एक कार्ड लगाया, उसका हाथ दिखाया. But before he could get there, Rohini had already come and she put a curtain and said, you give money, you get the bakshish, then you can get darshan. It's like you go to Gokul, still they do like that. Oh, these people came from Kuwait, they have a lot of money. They close the curtain. You give donation, then you get darshan. Still going on from 5,000 years. So Nanda Baba, he took the golden necklace from his neck, he gave it to Ma Rohini. Nanda Baba, yeah, Soni wale har, Ma Rohini ko de diya, or Ma Rohini darshan ko diya. Or Nanda Baba ka darshan hua, Ma Yashoda ke ko diya. Oh, Sundar, jaisa Neil musk. What do you say musk? Musk means? Just on the tip of my brain. Kasturi, Neil Kasturi ka saman, chota bacha hai, Sundar Sundar kesh, mugri wale kesh, choti choti hat or pao, choti choti angliyan. Or one's ek angli फिर भी फंसे है इसके केश में. So we saw this beautiful child like black musk, beautiful eyes and beautiful hair. And Nanda Baba, he broke open the treasury house and began to give charity. Nanda Baba iska koshkar ko tod diya और दान देने लगे. इतना दान दिया, इतना दान दिया, इतना दान दिया, जो लेने वाले ने सोचा कि हम इतना दान नहीं दे सकते हैं. He broke open his coast, he broke open the treasury, he gave charity. He gave so much charity, that people who were receiving were thinking, I'm not worthy to receive so much charity. Did we ever get an experience like that? We never did. We go to our best donor, it's Janmastami, to get it. And he gives us envelope all sealed. We go back to the temple and pull it out. Looks like 1 or 2 zeros are missing. Like that we got experience. Aisa anubhav hua. But ye braj hai, ye magic, ye jadoo wali karne lag jagah hai. This वही हो सकते हैं ब्रज से. देने वाला सोचे कि हम इतने गुण नहीं है कि इतना दान दे सकते हैं. ये ब्रज. And all the Brishvasis came running. And they all began to sing and dance. Nandagara Nandagayo Jai Kanaya Lal Ki.
Nandagara Nanda Bayo Jai Kaniya Lal Ki. Jai Kaniya Lal Ki, Jai Kaniya Lal Ki. Jai Kaniya Lal Ki, Jai Kaniya Lal Ki. Nandagara Nanda Bayo Jai Kaniya Lal Ki. Nandagara Nanda Bayo Jai Kaniya Lal Ki. Hati Dini Gora Dini Or Dini Palki. Hati Dini Gora Dini Or Dini Palki. Nandagara Nanda Bayo Jai Kaniya Lal Ki. Lal Ki. Jai Kaniya Lal Ki, Jai Kaniya Lal Ki. Jai Kaniya Lal Ki, Jai Kaniya Lal Ki. Nandagara Nanda Bayo Jai Kaniya Lal Ki. Hati Dini Gora Dini Or Dini Palki. Hati Dini Gora Dini Or Dini Palki. Om Nandagara Nanda Bayo Jai Kaniya Lal Ki. Om Nandagara Nanda Bayo Jai Kaniya Lal Ki. Jai Kaniya Lal Ki, Jai Kaniya Lal Ki. Jai Kaniya Lal Ki, Jai Kaniya Lal Ki. Nandagara Nanda Bayo Jai Kaniya Lal Ki. Johanan go Hati Gore, Budin go Palki. Johanan go Hati Gore, Budin go Palki. Johanan go Hati Gore, Budin go Palki. Budin go Palki. Nandagara Nanda Bayo Jai Kaniya Lal Ki. Nandagara Nanda Bayo Jai Kaniya Lal Ki. Jai Kaniya Lal Ki, Jai Kaniya Lal Ki. Jai Kaniya Lal Ki, Jai Kaniya Lal Ki. Nandagara Nanda Bayo Jai Kaniya Lal Ki. Johanan go Hati Gore, Budin go Palki. Johanan go Hati Gore, Budin go Palki. Oh, Nandagara Nanda Bayo Jai Kaniya Lal Ki. Oh, Nandagara Nanda Bayo Jai Kaniya Lal Ki. Jai Kaniya Lal Ki, Jai Kaniya Lal Ki. Nandagara Nanda Bayo Jai Kaniya Lal Ki. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Haribo, 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 Haribo. Haribo, 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 Haribo. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Shri Krishna Janmashtami Mahamahotsav ki, Shri Vrindavan Dham ki, Revealer of the Holy Dham, Srila Prabhupada ki, Jai Jai Shri Radhe. Hare Krishna. So I say Brishvasi Gan Krishna Janmashtami Minahe. In this way, the Brishvasis celebrated the first Janmashtami festival. Thank you very much. हरे कृष्णा सभी बैठ जाए अपनी जगह पर I request all the devotees to please take your seats. सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए थोड़ा आइए पीछे भक्त खड़े हैं All the Mataji's children, Prabhuji's, please take your seats. हरे कृष्णा। तो देखिए बहुत सुंदर रूप से हमने कई जन्माष्टमी पर ये कथा हम लोग श्रवण करते हैं, बट इस बार की जन्माष्टमी हमने बहुत विशेष कथा का श्रवण किया है। नंद बाबा के उनके पूर्वज के वंश से लेकर के कैसे ये पूरी घटनाक्रम जो हुई है, भगवान की दिव्य जो जन्म हुए हैं उनके बारे में हमने श्रवण किया, और ये हम सबका परम सौभाग्य है। We are extremely fortunate that such devotee who himself is relishing this wonderful nectar, only they can drown all of us in such nectar. तो हम सबको ऐसे व्रत की इतनी सुंदर महिमा के रूप में भगवान के इस प्राकट दिवस की कथा जन्माष्टमी पर सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। हम सबको ये परम सौभाग्य हमारा। जैसे व्रज में मनाते हैं जन्माष्टमी, वैसे आज हम सब ने यहाँ पर जन्माष्टमी मनाई है, तो ये हम सबका, ये जिन भक्तों के हृदय में व्रज सदैव विद्यमान रहते हैं, पादार बिंदु हृदय श्रुते श्याम, भागवत बताते हैं कि ऐसे भक्त तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वो सदैव तीर्थ को अपने साथ में ले चलते हैं, और जहां पर जाते हैं वहां पर उनकी वाणी के माध्यम से, उनकी कथा के माध्यम से वो पूरा तीर्थ प्रकट कर सकते हैं। So we are extremely fortunate to have Prabhu with us on this wonderful day, and entire hall is packed up, and everyone, I was observing everyone, children, Mataji's, Prabhuji's, they were so absorbed the last 1.5 hours. पिछले 1-1.5 घंटे हम लोग इतने बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण कर रहे थे, और सबको लग रहा था कि ये कथा और चलती रहे। सही बात है? तो अभी सब सुनना चाहते हैं कथा, तो उसके लिए हमें प्रभु से विनती करनी होगी कि प्रभु हर वर्ष यहाँ पर आए और हमको ऐसी व्रजधाम की कथा का श्रवण कराते रहे। तो हम सब दिन बंधु प्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो अभी अगला कार्यक्रम प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो अभी हम लोग प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाएंगे। उसके पहले बहुत महत्वपूर्ण सूचना ये है कि हम सब यहाँ पर